स्वास्थ्य ही संपद और स्वास्थ्य को नहीं समस्ते बेस चिंता प्रकाश करिथांती एवं स्वास्थ्य को नहीं जत्नवान मध्य होइथांती। विशेषकर कैंसर को नहीं समस्त मन में अनेक प्रश्न थाए और से प्रश्नर उत्तर पाई वर्तमान आम सहित जड़े स्पेशलिस्ट अच्छा जहाँ सहित आम आलोचना करवा से होती आपोलो हॉस्पिटल सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तपस्विनी प्रधान। मैडम स्वागत करुच्ची आपको खबर ओडिशा को केमती अच्छा खूब भल मैडम समस्त मन में अनेक प्रश्न थाए विशेष क्षेत्र को लेकिन कैंसर अनेक स्टेजेस अच्छी अनेक क्षेत्र अच्छी आपण क्यों बेसी स्पेशलिस्ट आपणकर कौन आपण काम करती मोर स्पेशलाइजेशन टा हेड एंड नेक कैंसर्स माने कि जो आमर कॉलर बोन ऊपर जो कैंसर्स हुए जमती ओरल कैविटी मुहर कैंसर ना नाकर कैंसर साइनसेस कैंसर कानर कैंसर थायराइड सलाइवरी ग्लैंड कैंसर ये सब जिनस मु स्पेशलाइज करे। मैडम जमती आपण कहले ओरल कैंसर कैविटी समस्ते बेस भावती कि मध्यवित्त परिवार लोक मैंने जो मैंने गुटखा खाती से कैंसर होता है किंतु आम बेले बेले देखा पाऊ कि छोट छोट छुआ मान जाए तो सहीटा केमती हो जाए। ओरल कैंसर्स रा कारण रे आमे डिस्क्राइब करू 14S माने 14 कारण अच्छी जोटा एस रे आरंभ हुए। एस प्रथम एस हूँ स्मोकिंग टा टबाको स्मोकिंग जनरली आमे कहू। सेकेंड हूँ स्पिरिट यानी कि रेफर करुची अल्कोहल को। थर्ड है स्पाइसेस मैंने बहुत मसालेदार चीज़ खाइले सेटा भी ओरल कैविटी को बहुत इरिटेट करे। देन यू हैव सेप्सिस माने पुअर ओरोडेंटल हाइजीन जदि दांतरे किसी प्रॉब्लम होची या गम्स रे किसी प्रॉब्लम ओरल हाइजीन टा बहुत पुअर अच्छी सी भी गोटे कारण बने। देन वायरसेस अच्छी जमती ह्यूमन पैप्लोमा वायरस सेटा भी गोटे कारण। गुटका जमती आपन कहले दैट प्रोड्यूसेस अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस सेटा भी कितने प्रतिशत लोगों ने ओरल कैंसर रे कन्वर्ट हो जाए। देन सिफिलिस ए गोटे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थिला जब पुराना जमाना रे बेसी थिला एबे देखिया पे एते मिडुनी बट दैट्स आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। देन यू हैव शार्प डेंटिशन माने कि अगर जो दांतटा बहुत शार्प अच्छे सो इट कीप्स इरिटेटिंग जो माने टंग कैंसर है आपन देखिए नाले गालर कैंसर बाकल म्यूकोजा कैंसर भी शार्प डेंटिशन एटा बहुत कारण बने। देन अनदर एस सनलाइट माने सूर्य किरण इट इज़ वेरी बेनिफिशियल समझते जानते कि सनलाइट एक्सपोजर विटामिन डी सिंथेसिस रे बहुत काम दिए बट कितने लोग जानते कि सनलाइट ओवर एक्सपोजर रे भी कैंसर हुए। तो जो हमारे हेड एंड नेक एरिया रे जो फेस रो एरिया टा बहुत एक्सेसिव लाइट को एक्सपोज सनलाइट को एक्सपोज हेले सेटा भी कैंसर करे। तो लिप रो जो कैंसर टा या स्किन रो जो कैंसर सनलाइट इंड्यूस्ड भी हुए। तो ये मूल्य कारण प्लस कहते सिंड्रोम्स भी अच्छे जो कि पेशेंट को प्रीडिस्पोज करे। तुम्हारा ये गोटे क्वेश्चन थिला पिला मानो को कहीं कैंसर होचे ना ओरल कैंसर टा आमे देखुछु कि आगे जोटा आमे 6 to the 7th decade 60-70 years रे देखुतलो एबे आमे 20-30 years रे देखुछु कहीं कि एटा चेंज हैला इज बिकॉज अर्ली इनिशिएशन आपन देखिए छोटो छोटो पिला माने भी तंबाकू खाउचंती छोटो छोटो पिला माने भी गुटखा खाउचंती। तो अर्ली इनिशिएशन माने कि एज एट विच दे स्टार्ट to pick up these habits it's so young so semane बहुत जल्दी ट्रैप हो जाउचंती to cancer so it is not uncommon plus cancers रे भी किछि अच्छी कि where you don't know the reason माने it can be so baffling कि आपनको जाना ही नहीं कि कारण कौन बहुत पेशेंट्स आसंते भी एमती कोनते हमें तो किछि भी आग भीतर किछि भी एक्सपोजर नहीं फिर कहीं की हैला। तो इट इज़ अ मिस्ट्री ऑल्सो बट जो कारण आम जानी छु वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम देम। मैडम जमती आपण दांत कथा कहले वर्तमान समय रे आपण भी बोधे देखुथिबे कि अनेक लोकंकर दांत रे समस्या आसे कार सेंसेशन ने प्रॉब्लम आसे किंतु सेटा कैंसर रे केते बेले परिवर्तन हुए। कैंसर गोटे इंडक्शन पीरियड अच्छी देयर इज अ लेटेंट पीरियड माने कि जदि से कारणटा रिपीटेडली रहिबो बॉडी रे पुअर ओरोडेंटल हाइजीन मुझे कहूँ
माने you have not taken care of your teeth and your gums, they are badly infected. ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ it may take 10 years, it may take 15 years, it may be as small as 5 years. କହିବା ମାନେ କି a condition ta has to be taken care of. Nobody knows that in me, if I don't take care of this condition, cancer will appear after 10 years. It may happen even after end of 1 year. तो जदि आम जाचु कि पुअर ओरोडेंटल हाइजीन टा भी कैंसर रे परिवर्तित हो पार, वी शुड टेक चार्ज ऑफ आवर बॉडी एंड गेट आवरसेल्व्स ट्रीटेड बाय अ डेंटल सर्जन. मैडम जमती आपण जानिथिबे कि चंदापण मध्य जीन रास्ते पारे आमे समस्त जानिचे, किंतु सेमती कैंसर कोन सेमती हेइ थाइ पारे जदि बापान को हेइची तापर कोन ता परवर्ती पीढ़ी को सेमती कैंसर हेइ परिबो बोली माने अछि. जेनेटिक्स जोटा कैंसर रे आमे देखुछु, इट्स इन अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन. माने कि 5-10% 5 to 10% of the cancers have a genetic inheritance. को cancers रे आपण देखिबे बहुत जोटा talked about is breast cancer. तादरे BRCA gene involved अच्छे. Breast cancer, ovarian cancer, colonic, pancreatic. Yeah, there genes role अच्छी, but that genetic role is also very small, 5 to 10%. But मोर आउ गोटे कहवा कथा is, suppose तुम्हारा father को cancer अच्छी and he is a smoker. तो say gene टा which is predisposing him to cancer is also there in the child. आपण देखिए there are lakhs and lakhs of people smoking, consume tobacco, समस्तों तो होनी, but 50% of them fall trap. तो suppose तुम्हारा निजर ही father या parent को होची, so that same gene is in you. तो यदि तुम्हारा को, if you also have the same habit of smoking or chewing tobacco, तो your chance of getting cancer is higher. So we also study gene and their susceptibility of patients to develop cancer in this manner also. एटा नुह कि से mutated gene टा जदि तुम पाखु जीव and then it is to your child, it will always transform into cancer. But you have to realize कि if that gene has caused cancer in your first relative and you also have the same gene, then your chance becomes higher. That is how आमे genetic role भी देखो cancers रे. आउ कौन कौन पॉइंट्स अछि जहा को हमें नजर रखिबा दरकार किंबा ता ऊपर ध्यान देबा दरकार कि एई सब जिनिस जुगु मध्य कैंसर हिथै पारे. सबु कैंसर अलका अलका कारण अछि. हेड एंड नेक रे आमे जेमती मेजरली कारण हैला टबाको, अल्कोहल, पान मसाला जो गुटखा हमें कहूँ सेटा सुपारी टा भी बहुत एडिक्टिंग एंड कार्सिनोजेनिक, एटा बहुत लोग जानते नहीं. Then dietary factors, माने आम dietary we are not consuming adequate vegetables and fruits. एटा जनता को जानिया दरकार. It is very protective. So vegetarian diet, the deficiency of vitamin A, B, C, iron, zinc, selenium, ए deficiency रे भी लोकमान को कैंसर हुए. प्लस वायरसेस अच्छी जमती ह्यूमन पैप्लोमा वायरस या एब्स्टीन वायरस एंड HIV, herpes simplex viruses रा भी रोल अच्छे. Then ionizing radiation exposure, माने कि जमती फेमस इंसिडेंट जोटा हैला हिरोशिमा नागासाकी तापरे देखिबे थायराइड कैंसर इंसिडेंस टा केमती बढ़ी गला. सो से जो आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर बॉडी रे एते चेंजेस आसला कि इट प्रीडिस्पोज्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू कैंसर्स. तो किछि किछि कैंसर्स अछंती जोटा कि रेडिएशन एक्सपोजर रे बॉडी रे कैंसर करांती. प्लस आमर जो थेराप्यूटिक रेडिएशन एक्सपोजर माने कि गोटे कैंसर आमे ट्रीट करछु, हॉजकिन्स लिम्फोमा पूरा बॉडी रे रेडिएशन दौचु, सेटा भी केबे केबे समय परे ट्रांसफॉर्म से पेशेंट्स को अन्य टाइप ऑफ कैंसर भी हो जाए. माने थेराप्यूटिक रेडिएशन रे भी देखरी पेशेंट्स माने आर डेवलपिंग अनदर टाइप ऑफ कैंसर. एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखिए कितने पॉल्यूशन हो जी, डीजल, पेट्रोलियम, देन इंडस्ट्री, किछि किछि इंडस्ट्री जमती वुड इंडस्ट्री अच्छी, एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री, टैनिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री से जो फ्यूम बने दैट प्रीडिस्पोजेस पेशेंट्स टू कैंसर.
ब्रेस्ट कैंसर अपन देखिए ब्रेस्ट कैंसर टा हॉर्मोनली डिपेंडेंट माने जो लेडीज माने लेट मैरेजेस करछंती एटा बहुत कॉमन अर्बन सोसाइटी रे लेट मैरेजेस not wanting children breastfeeding करंतिनी then a lot of use of oral contraceptives plus postmenopause hormone replacement therapies ये सबुर प्रभाव पड़ुची आम बॉडी रे जो कारण रो कैंसर होची लंग कैंसर अगेन मेजरली स्मोक इंड्यूस्ड हुए प्लस डाइटरी डेफिशिएंसीज रे हुए देन डाइट रे आम जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम माने डाइजेस्टिव सिस्टम रे जोटा कैंसर जो हुए दैट इज प्राइमरली डाइट इंड्यूस्ड अगर डाइट रे हमर डाइटरी फाइबर्स एडिक्वेट हवनी if you are towards more towards a non-vegetarian diet, not taking adequate vegetables and fruits, taking lot of spices, that predisposes to cancer over a period of time. हाँ मैडम विशेष करी मिडिल क्लास फैमिली रे सेमाने रेगुलर चेकअप पाई जाई पारंतिनी जणा न थाए कि कैंसर होउची ना नाही तांको विषय बेसी नॉलेज न थाए कि आइडिया भी न थाए तो जणे जानिबो केमिति बॉडी सिग्नल दिए बट सही सिग्नलटा आमे इग्नोर करो जो सिग्नलटा एंड सिग्नल विल डिपेंड अपॉन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द कैंसर माने कि जस्ट लेट अस टेक ओरल कैविटी मुहर कैंसरटा केमती देखा जाए नॉन हिलिंग अल्सर गोटे घाव अच्छे जोटा हिल करूनी आपण एंटीबायोटिक्स नहीं नेले पेन किलर्स नहीं सब कर साचंती 4 हफ्ता हेगलानी हिल होनी या एबनॉर्मल ग्रोथ हेची ये दांतटा लूज हो जाए विदाउट एनी रीजन या अपन ओरल ब्लीड होची या खाइबा पीबारे बहुत पेन होची डिफिकल्टी होची वॉइस चेंज हेगलानी सो एनीथिंग एबनॉर्मल जोटा आपण को मेडिकेशन रे बिल्कुल रिजॉल्व करनी गोटे मास हेगलानी कंटिन्यू करची सिग्नल बॉडी रो सिग्नल चेक तो सही चेकटा जोटा आसे बहुत थर आमे माने इग्नोर करू and we try to treat ourselves thinking that we are doctors से इतना हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करिया चाहूँ कि जब भी बॉडी रो सिग्नलटा जो whenever it exceeds 4 weeks 3 to 4 weeks time to go to a specialist stomach रो कैंसर गैस्ट्राइटिस चालची एसिड रिफ्लक्स चालची पेटर बहुत एसिड बनची छाती बर्निंग सेंसेशन होचे यू टेकिंग डाइजीन सेल्फ ट्रीटमेंट मासे मासे चालची we have never gone to a specialist धीरे धीरे से टिप कैंसर है and that is producing acid so body gives signals body बिल्कुल signal दिए but आमे ignore करो so my message is को भी signal आपको जोटा मिलुची जोटा exceed करे जाउची 1 month you should not ignore बिल्कुल देखिया दरकार मतलब ट्रीटमेंट विषय रे कथा बा जेमते हमें जानचे केमोथेरापी ही गला कि भाई बड़े आउ कौन कौन टेक्नोलॉजी अच्छी जहाँ साहाଯ୍य रे हमें कैंसर ट्रीट कर परिबा कैंसर ट्रीटमेंट जोटा बहुत डेवलप कर जाए छे पुराना जमाना देखिबे लॉट ऑफ पेशेंट्स यूज्ड टू डाई एबे हमें देखछु पेशेंट्स आर सर्वाइविंग कितने वर्ष से माने सर्वाइव करछन्ते सो सबु कैंसर गोटे इंटरनेशनल गाइडलाइन अच्छी ट्रीटमेंट गाइडलाइन आउ स्टेज मुताबिक अच्छी अर्ली स्टेज रे आपन देखिबे सिंगल मोडालिटी ट्रीटमेंट हुए माने सर्जरी हबा नाले रेडिएशन हबा नाले कीमो सेंसिटिव ट्यूमर रे कीमोथेरेपी मिले तो प्रायर देख जो कैंसर ट्रीटमेंट रे 3टा मोडालिटीज मोटा मोटा 3टा मोडालिटीज सर्जरी रेडिएशन आउ कीमोथेरेपी ट्रीटमेंटा डिपेंड करिबो पेशेंट स्टेज को स्टेज रे आछे सेकंड डिपेंड करिबो को ट्यूमर संगे तुमे डील करछ थर्ड डिपेंड करिबो कि कोठी एटा लोकेटेड where is it a blood cancer is it a lung cancer is it a oral cancer depend kariba site of origin then the third is what is the general condition of the patient को treatment ता tolerate कर पारिबो कि नहीं so जो permutation combination ता हुए बहुत factors अच्छी which you have to list out and then figure out what is the right treatment combination तो मत जदि आप जनरल क्वेश्चन पचारे कैंसर केमती ट्रीटमेंट हुए आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू आंसर इट इन अ प्रॉपर मैनर कहीं सबू एनाटमिकल साइट माने मोर हेड एंड नेक एरिया साइट देखिबा
प्राय सब कैंसर्स हेड एंड नेक कैंसर्स को सर्जिकली ट्रीट करा जाए अनलेस पेशेंट आसे कि एते एडवांस स्टेज कि आपण सर्जरी कर पारिबनी इन दैट स्टेज ईदर यू गिव कीमो रेडिएशन और यू गिव कीमोथेरेपी लंग रो कैंसर अगेन डिपेंड करिबो एटा को टाइप ऑफ कैंसर इज इट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज इट एडेनोस्क्वामस द वेराइटी ऑफ कैंसर्स वे आ सब कैंसर रो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल अच्छी ट्रीटमेंट पाई एबी तो लेटेस्ट जोटा हमर आछि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रीटमेंट्स जमती रोबोटिक सर्जरी आछि लेजर्स आछि इनफैक्ट ब्रेन पाई बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी भी आसीगलानी जोटे यू कैन डू ब्रेन सर्जरीज ब्रेन ट्यूमर्स विदाउट ओपनिंग अप द स्कल तो एते एडवांस हो गलानी कैंसर ट्रीटमेंट मैडम योगा एक्सरसाइजेस या कोन किछ प्रभाव पकई पारे कैंसर ऊपर exercise let us see what exercise does exercise माने physical activity न हबा जोगो we don't control our body weight माने कि when you term a person to be obesity India जोटा it is ranking 3rd in the world US तापरे चाइना तापरे इंडिया तो आमर ओबेसिटी लेवल टा बहुत बढ़ सारानी आम देखो देर इज मैल न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री बट ओबेसिटी इज वेरी हाई दैट इज बिकॉज वन वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग सेकेंड नो फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज आम जो लाइफस्टाइल बिल्कुल बदली गलानी यू बिकम सेडेंटरी बसिकी सब काम हो फोन रे सब काम हो टेक्नोलॉजी एमती आसीगलानी दैट we have become complacent but then body tells us that this is not done kaiki na physical activity no hoba jogu weight gain ette hochi khali obesity apan dekhibe is the reason for around 20-25 cancers breast cancer uterine cancer gallbladder cancer stomach cancer pancreatic cancer किडनी कैंसर इतने कैंसर्स अच्छे जोटा कि खाली बॉडी वेट अगर आप कंट्रोल कर लेवे that cancer will not come to you. So physical activity is very important. Physical activity माने कौन you should do regular exercises 5 times a week minimum 30 minutes. आउ से activity टा इतने vigorous हवा का था कि you should be feeling your heartbeat. लोग माने जानती morning walk पाई आधा time they are discussing talking to each other no I have done my physical activity no this is not activity simply dedicating 30 minutes for yourself I think समस्ते करि पारिबे आधा घंटा 24 hours रे तुमे जदी आधा घंटा निज पई दे पारिबनी it is pointless and it is being very selfish to your body that you not giving adequate attention physical activity hela yoga is not just exercises ये खाली आसना टा योगा नुह yoga is the union between body and mind तो तादरे बहुत it's a very complex thing and by doing yoga you learn how to control your mind that mind control most of our diseases are psychosomatic even cancer रे भी बहुत psychosomatic factor अच्छे stress inducing cancers so when you do yoga you would learn to relax your mind to rest your mind calm your mind and that itself relieves your body of so many issues so I mean yoga does not cure cancer but it alleviates lot of factors which are related to cancer that peace that you get helps to heal your cancer it may not treatment you will do surgery कराएंगे रेडिएशन कराएंगे कीमोथेरेपी वो सब आप कराएंगे बट क्यों योगा से आपको अपना माइंड पे कंट्रोल आएगा और उसी माइंड कंट्रोल से आप इस बीमारी को आधा भगा देंगे दैट इज द रीजन व्हाई योगा एंड फिजिकल एक्टिविटी आर इम्पोर्टेंट जैसे कि आप माइंड रो कथा कहले जेमती आपण कि जदी जणे मेंटली स्ट्रांग अछि ताहले कोन से कैंसर को क्योर करि परिबो बिल्कुल 100% मु तो निजो डे टू डे प्रैक्टिस रे देखे पेशेंस जे पॉजिटिव जार एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज पॉजिटिव से तो कैंसर को एमती बैटल करके रखे इनफैक्ट दे कम एंड मोटिवेट अस
दे टेल अस मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ. यू फील सरप्राइज्ड दैट ये पेशेंटा मते देखो केते पॉजिटिव वाइब दोचे. So that positive vibration जोटा जो बॉडी रे से he is sending, that does his work because it immune system to इमती drive कर दे and immune system helps to fight his cancer. ଯେମିତି ଆଜିକାଲିର you must be hearing immunotherapy has come in a big way. ସେଟା କେମିତି ହେଉଛି? That is actually you are boosting the individual's immune system to fight the cancer. तो आम न्याचुराल रूप रे केमती करेबो? न्याचुराल रूप रे एमती करे by giving positivity to your body. So if the mind is positive, you will realize कि से जो कैंसर टा जोटा आमे which we thought we cannot treat gets treated. So that's the beauty. Human body is such a beautiful machine. ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ युवराज सिंह ହଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବିଜୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ଶେଷରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଲାଣି, ସର୍ଜରୀ ଆସିଗଲାଣି, ମେଡିସିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? କ୍ୟାନ୍ସରଟା it is a highly treatable disease. ଆଉ जोटा आमे आगुरु भाबुथलु कि कैंसर माने डेथ सेंटेंस, एटा इज नॉट ट्रू इन टाइम्स ऑफ नाउ. बस खाली एटा जोटा रिमेंबर करिया कथा इज कम एज अर्ली एज पॉसिबल. जिते जल्दी डिटेक्ट हबो, जिते जल्दी डायग्नोसिस हबो, आपन को प्रोग्नोसिस ता एक्सीलेंट रहबो. प्रोग्नोसिस माने फ्यूचर पेशेंट रो बिल्कुल भल रहबो. सेकंड इज ए जो हैबिट्स आमर बहुत कैंसर पेशेंट्स माने जानते अच्छा स्मोकिंग रु हैला, पान तंबाकू रहला, जेमती आमे कहू स्टॉप इट, दे विल स्टॉप इट. कैंसर टा ट्रीट हे जिवो, फेर आउ थरे से हैबिट को आसनते. वेरी रॉन्ग. गोटे थर कैंसर रे जदी आपण बाहर जाइचंती, प्लीज डू नॉट रिसॉर्ट टू द सेम हैबिट्स. काहे कि ना जदी तुम्हें फेर से हैबिट को आसीबो, again you can have the cancer. Eta no ki gote thara treat he gala, you are treated forever. Na. The third is be positive. Positivity, patience and perseverance. Eta tinta P is extremely important for everybody in their lives. Cancer patient pai to auri important. Unless he is positive, he cannot fight. Perseverance because he has to struggle through the whole treatment. And then the third is patience. A treatment, a cancer treatment is so long. It's a very long driven process, and that is why they have to hold on to their patience and say that God has given you this life, you have to live it, you have to live it the best way that you can do. Even if you got cancer, it is your testing time. So fight it out, be a winner. थैंक यू सो मच मैम, आपण आम पाखक आसते एते तथ्य आमको प्रदान कले जमती मो मनरे थिला. अनेक साधारण जनता मनरे मध्य अनेक प्रश्न थिबो, से प्रश्न आपण सब उत्तर देले, सेथिपे अनेक अनेक धन्यवाद. आम कार्यक्रम को आसिले सेथिपे मध्य अनेक अनेक धन्यवाद. आपण समस्त को कहबा पई चाहिबी स्वास्थ्य को नहीं आपण अनेक चिंता करथिबे, विशेष करी कैंसर को नहीं, हेले से सब प्रश्नर उत्तर बोधवे आमे आपणक पाखरे पहुंचाई परिथिबु. एवं निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु एवं निज देहर मध्य जत्न नियंतु. रहुची पुणी देखा आ गोटे अध्याय. नमस्कार.